This one, that is Sertoli cell function is एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ये प्रोड्यूस करते हैं, इनहिबिन भी प्रोड्यूस करते हैं, एंड मेजर फंक्शन ऑफ सेटेलाइट सेल इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स. Somatostatin act on beta islet cells, that is cell of the pancreas. The function is paracrine. It means the somatostatin it is produced from, ये आपके पास ब्रेन से प्रोड्यूस हो रहा है. इट मीन्स कि somatostatins प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके पिट्यूटरी से. फंक्शन कहाँ पे कर रहे हैं ये? पैंक्रियाज पे. इट मीन्स के द फंक्शन in which the hormone is released from one side and function on other side, it is called as paracrine. Testosterone main function is increase muscle and bone growth. It means the development of male secondary sexual characters. The most common type of salivary gland tumor is parotid. Parotid के अंदर सबसे ज्यादा ट्यूमर के चांसेस होते हैं और सबसे कॉमन ट्यूमर होता है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा और सीरस टाइप ट्यूमर्स आर मोर कॉमन. थायराइड हार्मोन इंक्रीज फ्री फैटी एसिड्स. फ्री फैटी एसिड्स का लेवल थायराइड हार्मोन इंक्रीज करा देते हैं आपकी बॉडी में. Which of the following does not increase in stress of surgery? That is insulin. इंसुलिन जो है वो आपका क्या करती है कि इट इज नॉट इंक्रीज इन केस ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस के अंदर आपका क्या इंक्रीज होगा? कॉर्टिसोल मोर देन एसीटीएच. कैल्शियम एक्सक्रीशन ऑफ द किडनी डज नॉट डिपेंड अपॉन. कैल्शियम एक्सक्रीशन जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करती. तो कैल्शियम एक्सक्रीशन बाय डिस्टल ट्यूब्यूल्स फ्रॉम द किडनीज. PTH more sensitive to calcium as there is inverse relation between PTH and calcium. Hormone involved in lymphocyte production, that is thyroid cells या thyroid hormones. Anterior pituitary acidophils they produce growth hormone. Growth hormone is produced from anterior pituitary. Concentration of which hormone does not change in pregnancy? That is growth hormone. Growth is controlled by human chorionic somatomamotrophin, not the growth hormone. So the growth hormone remains intact and the growth is maintained by human chorionic somatomamotrophin. Which hormone causes extra hepatic protein catabolism and hepatic protein anabolism? The answer is cortisol. Remember, this is an again important MCQ. एक्स्ट्रा हेपेटिक कैटाबोलिज्म है और हेपेटिक में एनाबोलिज्म. तो आपके पास दो प्रोसेसेस एक ही टाइम पे हो रहे हैं, कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म. अल्टीमेटली दिस इज द मेटाबोलिज्म. द आंसर इज कोर्टिसोल. इंसुलिन इंक्रीज्ड बाय ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन कॉज हेपेटिक ग्लाइकोजन सिंथेसिस. ग्लाइकोजेनेसिस कराता है ग्रोथ हार्मोन. Hormone responsible for oxidative phosphorylation and increase in body temperature, that is thyroid hormone. थायराइड हार्मोन आपके क्या करते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कराते हैं और इंक्रीज कराते हैं बॉडी टेम्परेचर. हैशिमोटोस थायराइडाइटिस के अंदर दिस इज एन ऑटोइम्यून कंडीशन. इसमें आपके पास एंटी माइक्रोसोमल और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही होती है. Regarding the adipose tissues, increase in the size by dividing adipocytes. यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल डिवीजन हो रही होती है, adipocyte डिवाइड होते हैं, there is increase in the size of adipose tissue. Propranolol act as antithyroid drug because it is act on beta receptor and it block that receptor. ये beta receptor blocker होती है. बीटा blockers हैं, ये आप देते हैं थायराइड पेशेंट्स को जिनके अंदर हार्ट के जो है ना वो फ्लटरिंग हो रही होती है, फिब्रिलेशन हो रही होती है, पैल्पिटेशंस कॉमन सिम्टम होता है हाइपरथायराइड पेशेंट में, तो आप उसको बीटा ब्लॉकर दे देते हैं. हाइपोथायराइड पेशेंट थायरॉक्सिन पे है, बेस्ट मार्कर क्या है? आपने TSH कराना है. नेवर गो फॉर T3 एंड T4. द बेस्ट मार्कर इज TSH. mechanism of action of propylthiouracil. Propylthiouracil is used in hyperthyroid condition. So it blocks the synthesis of thyroid hormone.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम, दैट इज लंग। आप देखिए कि लंग का कैल्शियम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कैल्शियम का जो पूरी पाथवे है दैट इज मेंटेन बाय, उसमें बोन्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, किडनीज हो सकते हैं आपके पास, जो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, थायराइड हो सकता है, पैराथायराइड, मोस्ट कॉमनली पैराथायराइड होता है। तो लंग्स हैव नो रोल विद कैल्शियम। ग्रोथ हार्मोन सिंथेसिस एंड रिलीज बाय आर्जिनिन, आर्जिनिन प्रीकर्सर होता है जो आपके ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा होता है। Regarding the growth hormone, it initiates the growth of bone and cartilage by somatomedins. Somatomedins, they are the mediators which causes the growth of both bone as well as cartilage. The hormone which produces, again, this is a repeated MCQ, protein anabolism in liver and protein catabolism in other tissue, that is cortisol. Most likely cause of hypercalcemia in malignancy is, malignancy mean if there is tumor and the patient presented with increased level of calcium, it means there is parathyroid receptor peptide. For example, it may be increased in carcinoma of thyroid as well as parathyroid. Hormone produces glycogenolysis, it means breakdown of glycogen करना है, ग्लूकोजेनेसिस करनी है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन करनी है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन से भी क्या प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोज। ग्लूकोनियोजेनेसिस करानी है, इट मींस कि न्यू प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द अदर मॉलिक्यूल्स। कीटोजेनेसिस करानी है, हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है अल्टीमेटली। ग्लूकोज इंक्रीज हो रही है तो हार्मोन विल बी ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हैज the opposite function as that of insulin. So whenever there is hyperglycemic condition, the hormone responsible is glucagon. And hypoglycemic condition कौन कराएगा? That will be insulin. थायराइड हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर इसके भी रिसेप्टर होते हैं सिमिलर टू द स्टीरॉयड हार्मोन। फॉर एग्जांपल पीछे हमने पॉइंट पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, उसके अलावा आपके पास टेस्टोस्टेरोन है। Activity of osteoclast in the bone is inhibited by, osteoclast activity inhibitor कौन है? That is calcitonin. Calcitonin क्या होता है कि ये आपके पास डिफरेंट कार्सिनोमास के अंदर या डिफरेंट आपके पास बॉडी कंडीशन है जिसमें कैल्सिटोनिन इंक्रीज हो सकता है। फॉर एग्जांपल इट इज इंक्रीज इन मेडलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। और ये क्या करता है? ये आपकी ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। इट मींस ओस्टियोक्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? दे आर द बोन रिजॉर्प्टिव सेल्स, तो बोन की रिजॉर्प्शन को ये इनहिबिट कर देगा। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स, osteoblast, osteoclast and osteocytes. Remember, osteoblast mean they are bone forming cell, osteocytes mean bone maturation cell, and osteoclast mean they are responsible for bone resorption. पेशेंट है, टैकीकार्डिया है, पैल्पिटेशन है, टीएसएच लो है। आफ्टर गिविंग थायरोट्रोपिन टीएसएच इज इंक्रीज, कॉज इज, इट मींस यहाँ पे उसने बात की हुई है कि थायरोट्रोपिन टीएसएच आपने दिया, थायरोट्रोपिन इज अ रिलीज हार्मोन। दिस इज द रॉन्ग आंसर। टैकीकार्डिया पैल्पिटेशन है, टीएसएच लेवल लो है, इसका मतलब है टीएसएच लो का मतलब क्या है? T3 T4 इंक्रीज होंगे, द पिक्चर विल बी मोर फेवरेबल टूवर्ड्स द हाइपरथायराइड। आगे उसने बताया कि आफ्टर गिविंग थायरोट्रोपिन टीएसएच इज इंक्रीज, इसमें इट मींस कि रिलीज हार्मोन दिया तो टीएसएच इंक्रीज हुआ। द प्रॉब्लम इज प्रेजेंट विद इन द ब्रेन, दिस इज हाइपोथैलेमस, तो कॉज इज हाइपोथैलेमस नॉट द thyroid. So problem is not in thyroid, problem is in the hypothalamus, that is due to thyrotropin. Target tissue of PTH, किडनीज। किडनीज जो है वो पैराथायराइड हार्मोन उनकी रीनल ट्यूब्यूल्स पैक्ट करता है, कैल्शियम की एक्सक्रीशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। पेशेंट विद बोन पेन्स, नॉर्मल सीरम कैल्शियम है, ALP इज इंक्रीज। अगेन दिस इज द रेपिटेशन ऑफ पॉइंट नंबर 1, दैट इज पेजेट्स डिजीज। ग्रोथ हार्मोन यूजेस विच ऑफ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, किसको यूज कराता है? सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो आपके फैट सेल से आती है, या फैट मॉलिक्यूल्स रिलीज 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। सो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इज फैट। मोस्ट एक्टिव थायराइड हार्मोन,
which is released in circulation, that is T3. एक्टिव फॉर्म इज T3 विच रिमेन अनबाउंड. और अगर ब्लड की बात आप करेंगे तो ब्लड में आपके पास T4 अबंडेंट होती है. तो ये रिलीज हो रही है आपके पास. एक्टिवेटेड फॉर्म इज T3 विच रिमेन अनबाउंड इन द ब्लड. Which of these stimulate the erythroid stem cells to proliferate and differentiate? एरिथ्रॉइड स्टेम सेल का मतलब ये है कि उसकी स्टिमुलेट कर रहा है और उसकी प्रोलिफरेशन कर रहा है. इट मींस कि देयर इज अ प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस. एरिथ्रोपोइसिस के लिए जो स्टिमुलस था दैट इज एरिथ्रोपोइटिन. द आंसर इज एरिथ्रोपोइटिन. The next is isthmus of the thyroid gland lies against the which tracheal ring. This is again an important MCQ. Isthmus जो है वो आपका कौन से रिंग पे होता है? 2, 3 and 4 tracheal rings. कॉज हेपेटिक ग्लाइकोजन सिंथेसिस. ग्लाइकोजन सिंथेसिस कौन करा रहा है? आपके पास ग्रोथ हार्मोन करा रहा है ग्लाइकोजन की सिंथेसिस. ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हैव सरफेस रिसेप्टर एक्सेप्ट. दिस इज अगेन the same point as I told in the previous one, that the hormones which having the nuclear receptors. तो इसके अंदर उसने बताया कि सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं एक्सेप्ट थायरोक्सिन. थायरोक्सिन के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एज the same case with the steroid hormones. Active form is T3. Iodine, which is not used in the thyroid hormone synthesis, is secreted from the body through. किस के थ्रू वो रिलीज हो रही होती है जो कि यूज नहीं होती? दैट इज secreted in the form of urine. Phosphorylase enzyme raised to cause glycogenolysis. It means again there is breakdown of glycogen and there is production of glucose that occur due to the deficiency of insulin. Whenever there is increased level of glucose, it means there is condition of hyperglycemia. There is deficiency of insulin. Delayed action of insulin is both are correct protein synthesis and fat synthesis. PTU propyl thiouracil क्या करती है? It inhibit the synthesis of thyroid hormone and it is given in the condition of hyperthyroidism. Other uses of thyroid hormone is lose weight. Immunostimulant hormone is. Immunostimulant means that which hormone responsible for your growth, for your immunity, for your defense mechanism. So that is growth hormone. Concentration of which hormone does not change in pregnancy? This is again the growth hormone. The growth is controlled by human chorionic somatomamotrophin. Female symptoms of hypothyroidism and lymphocytes. हैशिमोटोस थायराइडाइटिस. अब देखें फीमेल है, सिम्टम्स आ रहे हैं, हाइपोथायराइड है लेकिन उसमें लिम्फोसाइट्स प्रीडोमिनेंट है. इट मींस फीमेल पेशेंट है, ऑटोसोमल कोई भी उसको डिजीज हो सकती है, दैट मे बी ऑटोम्यून. तो ऑटोम्यून डिजीज है, हाइपोथायराइड है, लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट है, तो दिस इज हैशिमोटोस थायराइडाइटिस. T3 T4 increase, TSH low, this is TSH is decreased, T3 T4 is increased, this is called hyperthyroidism, not hypothyroidism. This is again a wrong answer. T3 T4 increased, TSH is decreased, this is primary hyperthyroidism. Hypothyroidism increases. Hypothyroidism आपका क्या करता है? Obesity कराता है, so it increases the serum cholesterol. 40-year-old female है, hypothyroid है, having mass. एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने बताया उसको कि आप FNAC एडवाइस की है, इट शो द इंक्रीज लिम्फोसाइट्स. 40-year-old फीमेल है, हाइपोथायराइड की पिक्चर एंड देयर इज अ मैस. सो इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मैस और एनी लीजन, इट कुड नॉट बी लॉन्गर हैशिमोटोस थायराइडाइटिस. अब देखें उसने बताया FNAC कराएं तो मैस है और मैस के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं लिम्फोसाइट्स. दिस इज थायराइड लिम्फोमा. तो थायराइड लिम्फोमा के अंदर मैस की हिस्ट्री होगी और आपके पास जो हैशिमोटोस थायराइडाइटिस है उसमें आपको जनरल प्रेजेंटेशन मिलेगी हाइपोथायराइड की विद इंक्रीज लिम्फोसाइट्स. यंग बॉय विद लॉस ऑफ वेट एंड स्लीप प्रॉब्लम. द आंसर इज वेट लॉस है, स्लीप प्रॉब्लम्स है, दिस इज हाइपरथायराइडिज्म. ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज इन हाइपोग्लाइसीमिया. ग्रोथ हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर. 60-year-old
पेशेंट है विद हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरथायराइडिज्म, विच ड्रग विल बी सेफ फॉर हिम, दैट इज बीटा ब्लॉकर। आपने बीटा ब्लॉकर देने होते हैं टू रिड्यूस द पैल्पिटेशन। So this is all about today's discussion.